स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है मेरी? कोई यस रिप्लाई सर। नहीं। हाँ, ठीक है ठीक है। देखो, जहां से कर लिए थे उसके आगे हम लोग चल रहे हैं। तो रिमार्क है, since xt, yt, zt are single valued functions of a given value t, तो t हमारा पैरामीटर हो गया। this t determines a unique point on the curve, तो इस t की वजह से ये एक यूनिक पॉइंट हो जाएगा। but the converse is not generally true, that is for a given point on the curve there may be more than one value of t, यानी कि कोई पॉइंट अगर कर्व पे दिया हुआ है तो उसके लिए t की एक से ज्यादा वैल्यू यू कैन गेट। However, if you restrict the interval I of values of t in such a manner that there is a unique value of t yielding a given point on the curve, then the equation 5 establishes a one-one correspondence between the points of the curve and the values of t in this new interval, say I star। तो देखो, जैसे सर्किल पे अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें दो वैल्यू मिलेगी टी की। और अगर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोई सर्किल है तो टी की ढेर सारी वैल्यूज मिलेगी, इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसीलिए है कि इसका यू कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब देख लो इक्विवेलेंट पाथ का क्या कॉन्सेप्ट है। We say that the two paths R1 and R2 of the same class M defined on the intervals I1 and I2 are equivalent if there exists strictly increasing function g of class M which maps I1 onto I2 and is such that R1 is equal to R2 composition G। तो अगर ऐसा हमें मिलता है तो हम कह देंगे कि R1 और R2 क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। We may now define a curve of class M in three-dimensional space as a set of points in E3 associated with an equivalence class of regular parametric representation of class M involving one parameter। और इक्विवेलेंट पाथ का डेफिनेशन याद रख लेना, कभी कभी पूछ भी सकता है। अब देखो, चेंज ऑफ पैरामीटर। Let R is equal to RT represent a parametric representation of a curve. Consider the transformation T is equal to FU, where FU is a real single valued analytic function in an interval J of values of the real variable U. And suppose that the values of T obtained when you take on all the values in J lie in and exhaust the interval I star as defined above. Then if we substitute Fu for T in this equation 6, the transformed equation will constitute a new representation of the curve. Let this transformed parametric equation be denoted by small r is equal to capital R U. Since this equation is a result of T is equal to Fu, so we get Ru is equal to RT. तो ये पैरामीटर टी की जगह पैरामीटर यू का हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ पैरामीटर। के बाद देखो, then dr by du is equal to dr by dt into dt by du. Since u is a function of t, so it is dr by du is dr by dt into dt by du. Now equation 6 में is a regular parametric representation, क्योंकि regular है तो dr by dt is not equal to 0. Then from 7, dr by du is not equal to 0 if and only if dt by du is not equal to 0. तो ये 0 तभी नहीं होगा when dt by du is not 0. Thus, we have shown that if t is a regular parameter, then the parameter u defined by t is equal to fu is also a regular parameter if and only if dt by du never vanishes. तो ये कंडीशन है। अब देखो, for example, the circular helix given by
r is equal to a cos t, a sin t, b t। यहाँ एक्स टी तुम्हारा ए cos t हो गया, वाई टी ए sin t और जेड टी हो गया बी टी, वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन पाई। देन डी आर बाई डी टी निकाल लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, देन यू विल गेट माइनस ए sin t, a cos t एंड b, and it is not equal to 0 for any value of t in 0 less than or equal to t less than pi। ये 0 नहीं हो सकता है, t की कोई भी वैल्यू लेंगे तो dr by dt is not equal to 0 where t is a regular parameter। if we say t is equal to 2 tan inverse u, then dt by du, इसको डिफरेंशिएट करो with respect to u, is equal to 2 by 1 plus u square। Since 2 by 1 plus u square is not equal to 0 for any value of u in 0 less than or equal to u less than infinity, इस इंटरवल में 2 by 1 plus u square not equal to 0, u is a regular parameter defined by u is equal to tangent t by 2। देखो यहाँ से t है 2 tan inverse u, so u will be tangent t by 2 in this interval। Now the transformed equation is, transformed equation क्या हो जाएगा, इसका यूज करना है t is equal to 2 tan inverse u, और यहाँ पर जो t है t को बदल देना है, यहाँ पर t को बदल देना है, यहाँ पर t को बदल देना है in terms of u। Then you will get the transformed equation as r is equal to a 1 minus u square by 1 plus u square, 2au by 1 plus u square, and 2b tan inverse u where 0 less than or equal to u less than infinity। तो ये कोई कठिन नहीं है, you can do yourself very easily using your intermediate formula and concepts। अब देखो some remark, we shall see later on that the parameter s, the arc length, is more useful and convenient to use in place of an arbitrary parameter t। In future we shall indicate differentiation with respect to arc length by using prime, prime means इधर dash दे देंगे, and differentiation with respect to any other parameter t with dots, t के रिस्पेक्ट में है तो डॉट दे देना है। Thus we shall write r dash का मतलब dr by ds, r double dash का मतलब d2r by ds2, और r dot means dr by dt and r double dot means d2r by dt2 etc। तो इसको याद रख लेना। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है तुम लोग का आर्क लेंथ का, तो ये निकालने के लिए अक्सर पूछ देता है, या तो यही आर्टिकल पूछ देगा, नहीं तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछ देता है। देखो, टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर आर्क लेंथ ऑफ ए कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में आर्क बन रहा है एक कर्व का, तो उसी का हमको लेंथ निकालना। लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी r is equal to rt। Suppose this is our curve. The positive direction along the curve is that in which the curve is traced when the parameter t increases। t increase कर रहा है जिस डायरेक्शन में, वो हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड द अपोजिट डायरेक्शन इज द नेगेटिव डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। इन द फॉलोइंग वी मेजर द आर्क लेंथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, suppose we are required to find the arc length between 2 points P and Q corresponding to the values A and B of the parameter T। देखो ये पॉइंट P है, इसको P नॉट बोल दिया, एंड दिस इज पॉइंट Q, सपोज दिस इज Pn पॉइंट, और यहाँ पर T की वैल्यू स्मॉल a है, हियर द वैल्यू ऑफ T इज स्मॉल b। नाउ कंसिडर एनी सब डिवीजन, ए बी का एक सब डिवीजन बना रहे हैं, सपोज दिस इज डेल्टा and it is equal to a, t naught less than t1 less than t2 so on less than tn is equal to b। यानी कि where t naught हो जाएगा a और tn हो जाएगा b, तो यहाँ पर rt1 हो जाएगा, this position will be rt2, this will be rt3, rti minus 1, rti, rtn minus 1 and rtn। Consider any subdivision of the interval ab corresponding to this subdivision, we have the length L delta. L delta means length with respect to this subdivision. This is equal to summation I
varying from 1 to n, pi minus 1 to pi. तो pi minus 1 to pi, this length, ये लेंथ को हम कंसिडर कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस rti माइनस ये जो आर्क लेंथ है इसका क्या होगा, इसका लेंथ pi माइनस 1 pi का लेंथ क्या हुआ, वेक्टर वाले नोटेशन से देखो तो इट विल बी rti माइनस 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस और उसका मॉडुलस ले लेंगे of the polygon inscribed to the arc joining the points P and Q. It is evident that an increase in the number of points, अगर number of points बढ़ा दें of subdivision, increases the length of the polygon. Polygon का length बढ़ जाएगा अगर subdivision बढ़ा दें number of points उसमें. Since the sum of the lengths of two sides of a triangle is greater than that of the third, therefore it seems plausible to define the arc length to be the supremum of L delta taken over all possible subdivisions of closed interval AB. तो क्लोज इंटरवल AB का जितना भी सब डिवीजन हम कर सकते हैं उनमें से वो सब डिवीजन लेंगे जिससे कि एल डेटा का हमारा सुप्रीमम मिल जाए. Since modulus of integration from ti minus 1 to ti r dot t dt is equal to modulus rti minus 1, so L delta is equal to summation I is equal to 1 to n modulus of integration ti minus 1 to ti r dot t dt. यहाँ पर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है विद दिस वैल्यू. Also by Schwarz inequality, we have summation I is equal to 1 to n modulus ti integration ti minus 1 to ti r dot t dt is less than or equal to summation I equal to 1 to n integration ti minus 1 to ti mod r dot t dt. And this is equal to integration from a to b modulus r dot t dt. Then 1 and 2, this 1 and this 2 show that the supremum of L delta is always finite. But infinite nahi, it is your finite. The right hand member of 2, this is finite and it is independent of delta. तो ये जो हमारा सब डिवीजन कर रहे हैं, this length is independent of delta. We shall now show the supremum of L delta is actually integration from a to b mod r dot t dt. तो इसका यूज हम लोग करेंगे लेंथ निकालने के लिए. If s is equal to st denotes the arc length from a to any point t, then the arc length from capital T to small t is st minus s capital T, where a less than or equal to capital T less than small t less than or equal to b. एक एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा तुम लोग को. Then by 1 and 2 it follows that st minus s capital T less than or equal to integration from capital T to small t mod r dot t dt. And by the definition of arc length we have modulus rt minus r capital T is less than or equal to st minus s capital T. Then 3 and 4 इनसे तो मिल जाएगा mod rt minus r capital T by t minus capital T is less than or equal to st minus s capital T by t minus t से डिवाइड कर देना है इसको, and it is less than or equal to 1 upon t minus t integration from capital T to small t r dot t dt. Letting small t tend to t in 5, small t को capital T की ओर टेंड करेंगे तो तुम्हें मिल जाएगा this will be your r dot t लिमिट लेने पर, तो mod r dot t less than or equal to this will be your s dot t and this is less than or equal to r dot t, क्योंकि जब लिमिट ले लेंगे तो r dot t हमारा बाहर आ जाएगा, इधर t minus t ये दोनों कैंसिल हो गया. Hence s dot t is equal to modulus r dot t. यहाँ से देखो निकला s dot t is equal to modulus r dot t. Since this is true for any capital T in the range of small t, we have s is equal to st integration from a to t modulus r dot t dt. यानी कि ये आर्क लेंथ के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. To find Cartesian form
we observe that r is equal to xi plus yj plus zk, so that r dot is equal to xi dot I plus y dot j plus z dot k. Hence, modulus of r dot is equal to under root x dot square plus y dot square plus z dot square. देखो यहाँ पे खाली रख देना है मॉडुलस, जब ये r है, r डॉट है गया दिस वन, अब इसका मॉडुलस लेंगे तो रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, और जो r इज इक्वल टू ए कॉस टी ए साइन टी और बी टी था, तो वहां से हम इसको निकाल लेंगे, r डॉट निकल गया, उसका मॉडुलस लीजिए यहाँ रखिए, इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू टी, इंटीग्रेशन के बाद सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यूज को। Therefore, s is equal to integration from a to t under root x dot square plus y dot square plus z dot square dt. So in this way, you can calculate the arc length of a curve. इस पे बेस्ड तुम्हारा सम एक्सरसाइज दिया हुआ है। देखो, डिफाइन स्पेस कर्व शुरू में बता दिए, आर्क लेंथ बता दिए, ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स दिस माइनस इन्फिनिटी लेस देन u less than infinity, where a greater than 0, refer to as parameter, and find the length of one complete turn of the helix. वन कंप्लीट टर्न के लिए 0 to 2 पाई वेरी करेगा, तो इन टर्म्स ऑफ s ये इक्वेशन आता है, और जो कंप्लीट टर्न है उसका लेंथ आ जाता है 2 पाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली देयर इज अनदर एग्जांपल, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द कर्व x is equal to this one, y to a t square, z this one, between the points t1 and t2 is this much. So you can do this also very easily. अगर तुम लोग को इसके बाद भी कोई डिफिकल्टी लगेगी तो मुझे पूछना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करा दूँ। अब इसको तुम लोग नोट कर लो, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी, तो मुझे पूछो।